welcome back to the Research Methodology Masterclass series. This is the last video wherein we are going to discuss about emerging trends in library and information science research. So, by the end of this lecture, you will be able to understand what are the current research areas and how to select suitable research topics and recognize future opportunities in library and information science research. As much as I have explored so far, I will be sharing with you all. So first of all, let us understand research trends होते क्या हैं. So research trends are emerging or evolving areas of study that reflect changes in technology, user needs, society and the information environment. मतलब जो भी इमर्जिंग और इवॉल्विंग एरियाज हैं जिससे कि टेक्नोलॉजी और यूजर नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम स्टडी करेंगे इन फ्यूचर, उसे बोलते हैं रिसर्च ट्रेंड. इससे जो रिसर्च एग्जिस्टिंग है उसमें से क्या गैप्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेलिवेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं एंड इनोवेशन को प्रमोट कर सकते हैं जिससे कि रिसर्च की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है. हम बात करते हैं इसका जो इवोल्यूशन है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च का. तो वो स्टार्ट होता है ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज से. आप सबको मालूम है ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज होती हैं वो जहाँ पर हम कहते थे कि लाइब्रेरीज आर कस्टोडियंस ऑफ द बुक्स, मतलब लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स को कैद करके रखा जाता था. जो बड़े लोग होते थे केवल वही लोग उसका एक्सेस कर पाते थे. नाउ इट हैज़ बीन चेंज. जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज दे स्टार्टेड disseminating the knowledge among the stakeholders of that particular region. फिर जैसे जैसे नीड्स ग्रो होती गई देन वी शिफ्टेड टुवर्ड्स ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज टू ऑटोमेटेड लाइब्रेरी जहाँ पर हमने ऑटोमेशन देखा. फिर हमने डिजिटल लाइब्रेरीज का इमरजेंस देखा. नाउ वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज and much focus is given to knowledge management and data science and artificial intelligence is also being incorporated which are giving worth to the smart and intelligent libraries. तो ये लाइब्रेरी साइंस का एक आप रोड मैप कह सकते हैं. ट्रेडिशनल लाइब्रेरी से स्टार्ट हुआ था. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लाइब्रेरीज. तो ये कुछ की एरियाज हैं जहाँ पर हम एडवांसमेंट देख सकते हैं लाइब्रेरी साइंस के अंदर. सो वी कैन अंडरस्टैंड बेटर बाई सीइंग वो द स्लाइड्स. जो ट्रेडिशनल रिसर्च एरियाज हुआ करते थे और अभी क्या इमर्जिंग है. पहले हम रिसर्च करते थे लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे, कलेक्शन डेवलपमेंट, रेफरेंस सर्विसेज, यूजर स्टडीज, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, बिब्लियोमेट्रिक्स, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन लिटरेसीज. तो जो भी डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं उनकी वजह से मच फोकस इज गिवन टू डिजिटल लाइब्रेरीज, institutional repositories, open access movements, electronic resources management, digital preservation, metadata standards, discovery services, and research data management. So the focus has been totally shifted from managing physical collections to managing digital knowledge, research data, and intelligent information services. Actually, this is not limited. ये वो है जो I have explored so far. So you can also explore more areas. So I'm just trying to give you a simple glance what is being emerging in the library science research. So if we talk about artificial intelligence in libraries, then the current research topics like AI powered library services, इसमें बहुत सारी research आपको देखने को मिलेगी. Chatbots and virtual references are being generated. जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, इसका यूसेज, इसका लाइब्रेरी सेक्शंस में कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, ऑटोमेटेड मेटा डेटा जनरेशन, एआई असिस्टेड कैटलॉगिंग, मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस, एथिकल यूज ऑफ एआई. ये सभी एरियाज में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं. So that was all about artificial intelligence in libraries. Similarly, we are having much emerging themes like open science and scholarly communication section, wherein open access publishing, open educational resources, open data, open peer review, preprint repositories, research integrity, research visibility के लिए we are having open researcher contributor ID, fair data principles for research data management.
So AI and open science are transforming the way libraries create, share, and preserve knowledge for a more open and intelligent future. We are also having data analytics and research. So herein we are having current research focusing areas like bibliometric analysis, scientometric studies, altmetrics, research impact assessment, citation analysis, research mapping, visualization using VOS viewer and bibliometrics. Similarly, popular research themes can also be found in user-centered research like information seeking behavior, user satisfaction, digital library, informational literacy, social media use, mobile library services, accessibility and inclusive libraries, user experience. So these are some key emerging areas like emerging technologies, IoT, blockchain, big data analytics, cloud computing, AR and VR, that is augmented and virtual reality, RFID and smart libraries, semantic web, linked open data. Similarly, we can also expect that these are the themes which are being much focused in the conferences and can be used for dissertation topics like AI in academic libraries, research data management, digital preservation strategies, library website evaluation, information literacy among students, AI ethics in libraries, open science practices, green libraries and sustainabilities. तो ये जो themes हैं कुछ वो हैं जो are popularly preferred by the students for master's dissertations and can also be seen in the conferences brochures. So that was all which I have explored so far. And if you talk about challenges, then yes, there are certain changes. Challenges are also existing, like rapid technological change, data privacy security concern, copyright और licensing, digital divide, कहीं पर एक्सेस है कहीं पर नहीं है. कभी कभार जो AI टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं उनकी जो बाइस्ड हैं जो रिस्पॉन्सेज और एथिक्स, प्रीडेटरी पब्लिशिंग, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सबसे जो इम्पोर्टेंट चैलेंज है मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करना. So that was all something which I have tried to cover up and bring here in emerging trends in library and information science. So please do not forget to watch all the videos which have I uploaded before this lecture, because all the important topics in the simple way are explained in the previous videos related to research. So thank you very much for joining me and stay connected and do not forget to subscribe the channel if you have not yet subscribed. And वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट with your friends also so that they can also get benefited. इतनी ज़्यादा इन डेप्थ तो नहीं है बट it will give you an idea कि क्या चल रहा है करंट में, so that you can already relate your existing knowledge with this something which I have provided here. तो थोड़ा बहुत आपको लिखने में और आपको समझने में आसानी होगी. So that was all which I have tried to convey whatever I have learned so far in research methodology area during my masters. Thank you very much. Now I will be bringing short important topics like bibliometric, a separate short video, how to measure the impact factors, how to count the citations, how to access various databases. So I will be making separate videos and a short videos for them. This was all about for giving you theoretical aspect which I have learned so far with the help of these PPTs in the form of images. So thank you very much once again.